हेलो टेस्टर्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग वीडियो कैप्चर कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशन दैट इज सपोर्टेड बाय टेस्ट एनजी। ओके, इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल दैट कैन वी रन मल्टीपल टेस्ट केसेस पैरेलली, बिकॉज सिक्वेंशियल तो वी नो दैट कि सिक्वेंशियल कैसे रन करना है। हम एक्सएमएल बनाते हैं और एक्सएमएल में हम लोग जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो सीक्वेंस में रन हो जाता है। बट वही सेम एक्सएमएल फाइल को हम लोग एज अ टेस्ट केस यूज करके कैन वी रन देम पैरेलली। ओके, तो ये पैरेलल जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होता है वो आज के सेशन में देखेंगे। परफेक्ट। सो बेसिकली देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रूटीन में पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रेफर नहीं करता। पैरेलल एग्जीक्यूशन कब करना चाहिए? ओके, लेट्स से हर एक प्रोजेक्ट में एक एंड टू एंड सिनेरियो होता है। हर एक प्रोजेक्ट में एक एंड टू एंड सिनेरियो होता है। जैसे मैं एक टेस्ट यहाँ पे एक पूरा सिनेरियो एलोबरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडमिन पैनल में गया। एडमिन पैनल में मैंने एक प्रोडक्ट को क्रिएट की। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद मैं वहां पे असर्ट कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट एडमिन पैनल में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। परफेक्ट। देन आई गो एंड चेक डेटाबेस। डेटाबेस में सेम प्रोडक्ट क्रिएट हुई कि नहीं इन अ टेबल। देन आई विल चेक इन द एपीआई फाइल, रेस्ट अश्योर का यूज करके मैं चेक करूंगा वहां पे वो प्रोडक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। देन आई ओपन यूजर पैनल। यूजर पैनल में वो प्रोडक्ट को मैं सर्च करूंगा। जैसे वो प्रोडक्ट दिखेगी मैं उसको कार्ट में ऐड करूंगा। कार्ट में ऐड करने के बाद आई विल मेक श्योर दैट वो प्रोडक्ट वहां पे क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। परफेक्ट। और वो प्रोडक्ट आने के बाद उसका पेमेंट होगा। पेमेंट होने के बाद ऑर्डर जनरेट होगा। ऑर्डर जनरेट होने के बाद मैं वापस से एडमिन पैनल में जाके चेक करूंगा कि ऑर्डर आईडी क्रिएट हुआ कि नहीं, जनरेट हुआ कि नहीं। सो दिस इज योर एंड टू एंड स्क्रिप्ट। सो आपके प्रोजेक्ट के 80 टू 90% फीचर्स एक ही फ्लो में आ जाएंगे। मतलब एक ऐसी फंक्शनैलिटी आप कैप्चर करो जिसमें एक फ्लो ऐसा आप कैप्चर करो जिसमें मोर देन 80% फंक्शनैलिटी एक ही फ्लो में आ जाए। What you can do is you can create one script, उसको नेम दे दो एंड टू एंड टेस्ट, और ये स्क्रिप्ट को अलग अलग ब्राउजर में पैरेलली रन कराओ। ओके, सो दिस इज द आइडियल वे। अदरवाइज कैसे होता है चलो अभी हम देखते हैं। सो पैरेलल एग्जीक्यूशन बेसिकली हम मेथड को कर सकते हैं, क्लासेस को कर सकते हैं, टेस्ट को कर सकते हैं, सूट को कर सकते हैं। हर एक में पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। सो हियर आई हैव क्रिएटेड वन पैकेज कॉल्ड टेस्ट केसेस। आई एम क्रिएटेड वन क्लास। आई एम क्रिएटिंग वन क्लास and that class name is test case 1. Test case 1. Oops, sorry. No, guys, not this. Here, yeah. Test case 1. All right. I'm creating three @test methods, oblique void, test 1, 2, 3. All right. This is test 1, test 2, test 3. All right. So guys, we have three tests in one class. Now, what I want to do, I want to execute them parallelly. मुझे तीनों को parallelly run करना है. So in that case, I'm going to create XML file. मैं एक XML file create करूंगा. So I'm creating a new package. That package name is test runner. I'm creating a new package test runner, and I'm creating a new XML file. Test execution. Dot
XML. ओके, कई लोगों को ऐसा है कि टेस्ट एनजी की फाइल बनानी चाहिए. यू कैन क्रिएट एनी नेम, यू कैन गिव एनी नेम. टेस्ट एग्जीक्यूशन डॉट एक्सएमएल मैंने नेम रखा. ओके, सो हियर आई विल राइट डाउन सूट नेम. सूट नेम, simply we write project name. Let's say project name, whatever your project name is, that we write. Okay, so guys, मैं पहले जो नॉर्मल हमारा हमारा जो टेस्ट केसेस का डेटा है वो एक्सएमएल में क्रिएट कर देता हूं. देन वी विल इंप्लीमेंट पैरेलल एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट हमको इंप्लीमेंट करना है. सो टेस्ट टेस्ट class, classes and class, right? Classes and class. Okay, so this test name is equal to test cases. This class name is equal to test cases dot test case one, right? Test cases package name dot your class name, right? So this is a normal XML file, test runner XML file we have created. Just let us run this. इसको एक बार run करके देख लेते हैं. And I can also set the priority here, but that is fine. चलो इसको run करते हैं. Right click, run as TestNG suite. So all three test cases, I mean all three tests will be executed. Test 1, this is test 2 and test 3. ये तीनों execute हो गया. But I want to execute them in a parallel way. So parallel execution करने के लिए guys आपको कुछ नहीं करना है. It's very simple. जब आप suite define करते हो, यहाँ आपको लिखना है parallel is equal to, okay, आपको parallel किसको रन करना है? आई वॉन्ट टू रन द टेस्ट. मुझे ये जो टेस्ट है ना उसको पैरेलल रन करना है, राइट? तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा मेथड्स. इट इज कॉल्ड मेथड्स. जो हमने टेस्ट बनाया ना, इट इज एक्चुअली अ टेस्ट मेथड. तो ये यहां पे हम लोग मेथड्स मेंशन करेंगे. चलो नेक्स्ट, यहां पे एक और पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज थ्रेड काउंट. थ्रेड काउंट. थ्रेड काउंट इज इक्वल टू, आई विल राइट 3. ओके, इन डबल कोट, thread count is equal to 3. Now what is thread count? ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि थ्रेड काउंट जब वर्ड यूज करते हैं ना तो ज्यादातर लोग को पता नहीं होता कि व्हाट इज थ्रेड काउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड काउंट? इज दैट हाउ मेनी टेस्ट, हाउ मेनी मेथड्स, क्लासेस will run simultaneously during the parallel execution. तो हमारे 3 मेथड्स है, we have 3 methods. तो तीनों मेथड को मुझे पैरेलली रन कराना है. सो each thread will work as a separate worker. तो एक थ्रेड जो होगा, one thread, we have mentioned 3 thread count, right? One thread will pick this test, second thread will pick this test, and third thread will pick this test, and the 3 all will execute them parallelly. So मेथड को रन करने के लिए आपको पैरेलल इज इक्वल टू मेथड्स लिखना है व्हेन यू डिफाइन द सूट. चलो इसको रन करके देखते हैं एंड विल सी द आउटपुट. सो देखा, इट्स अ रैंडम गाइस. ऐसा नहीं कि उसने लास्ट वाला पहले रन किया, बट इट्स अ रैंडम. पैरेलल वे में रन करता है तो कभी कभी 3 पहले रन हो जाता है, सेकंड बाद में रन होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कराते हो. सो दिस इज possibility number 1. We can run them, I mean we have executed methods in a parallel way. Okay, second option, we want to run different classes. मुझे तीनों क्लास, मतलब मैंने 2 अलग अलग क्लास बनाए हैं. मैंने अलग अलग 2 क्लास बनाए और 2 क्लास में अलग अलग टेस्ट डिफाइन किए हैं. लेट्स से आई हैव टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 2. In test case 2, I have one test, public void
test4. Here I am writing test4. This is test4. All right. And I'll copy this, or else I'll copy the test case. I'll paste it here. This is our test case 3. And in test case 3, we have test 5. This is test 5. So now here we have two separate test cases, test case 2, test case 3. Or we have three separate test cases. Okay, so I'm considering test case 2 and test case 3 and I want to run them in a parallelly. मतलब मैं बेसिकली इसको रन करना चाहता हूं. ओके, दोनों जो क्लास है, सॉरी, दोनों जो क्लास है उनको मैं पैरेलली रन करना चाहता हूं बिकॉज वी हैव टू सेपरेट क्लासेस, राइट? टेस्ट केस 2 एंड टेस्ट केस 3. सो इन द एक्सएमएल फाइल हमको यहां क्या लिखना है? वी नीड टू मेंशन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, and instead of methods we will write classes. आपको classes लिखना है. So when you write classes, what it will do, it will execute these two test cases parallelly. ये दोनों test cases को parallelly run करेगा. So let me run this. Right click, run as TestNG suite. So उसने 4, 5 को पैरेलली रन किया. गाइस अभी हमको पता नहीं चल रहा है बिकॉज वी हैव रिटन सिंपली system.out.println, बट व्हेन यू क्रिएट अ स्क्रिप्ट, जब आप स्क्रिप्ट बनाओगे, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से क्रिएट करो. एंड ये सब हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि कैसे इसको रन करना है. तो जब आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट केस बन जाए, विचार कई बार गाइस कुछ टेस्ट केस ऐसे होते हैं कि जो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए. लेट्स से अभी मैंने बात किया प्रोडक्ट. नाउ व्हेन यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, राइट, व्हेन यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट सेम नेम की प्रोडक्ट दूसरी हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्रोडक्ट्स नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड. फाइन. नाउ वही टेस्ट को अगर आप पैरेलली रन करोगे फॉर डिफरेंट ब्राउजर्स, okay, so it will give you an error. Why? Because you are trying to create a product on Chrome, Edge and let's say Firefox, but product का नेम तो आप सेम टाइप कर रहे हो वहां पे. फाइन. तो that will create a problem. Because when you run them parallelly, all three tests will be executed parallelly, and वो तीनों टेस्ट में प्रोडक्ट का नेम क्रिएट हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एंड दैट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन. ज्यादातर इंटरव्यू में वो आपको कंफ्यूज करते हैं. चलो, so this is scenario number 2. What we have done, we have created two separate test cases, and in both test cases we have @test annotation method. Okay. Third one is we want to run parallel execution by test. Parallel execution by test. Okay. So test बाहर आ जाए. जैसे this is one test. ये one test है. Okay. So what I am doing is I am going to create, this is, let's say ये है user panel test cases, ये है admin panel test cases. Okay. और मैंने, so ultimately you are having multiple test cases in user panel, you are having multiple test cases in admin panel. आपने दो अलग अलग टेस्ट क्रिएट कर दिए हैं. So you have one set of group for like user panel test cases, and you have set of group for admin panel test cases, right? चलो अभी इसको मुझे रन करना है. So इतना आपको आइडिया नहीं आएगा गाइस, बट यहाँ इंस्टेड ऑफ क्लासेस आपको लिखना है टेस्ट. आपको टेस्ट लिखना है. क्यों? बिकॉज दिस टू टेस्ट, गाइस यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या कंफ्यूज होता है कि ये टेस्ट और ये टेस्ट दोनों सेम नहीं है. नो, दे बोथ आर डिफरेंट गाइस. दिस इज योर टेस्ट एनोटेशन. दिस इज बेसिकली फॉर अ मेथड, राइट? और एक्सएमएल फाइल में जो टेस्ट मेंशन किया है ना, ये टेस्ट क्या होता है बेसिकली? ये टेस्ट होता है कि जिसके अंदर आपके क्लासेस आ जाते हैं और क्लासेस के अंदर मेथड्स आ जाती है. वो एक पूरा टेस्ट कंसिडर होता है.
So make sure both are different things. Okay, so both test sections will run in parallel. Okay, और यहाँ पे आप thread count 2 लगा सकते हो. You can have 2 thread count. Okay, और जब आप रन करोगे you will get the same output. So 5 4 उसने प्रिंट किया. So दो टेस्ट है, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, ये दोनों क्लास है, ये दोनों क्लास उसने एक टेस्ट केस की तरह कंसिडर किया गाइस. परफेक्ट. सो आपको क्वेश्चन होगा कि हाँ इन रियल टाइम हाउ डू वी डिफाइन इट, कैसे हम डिसाइड करेंगे गाइस. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. बेसिकली आपने ऐसा किया है कि कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए हैं. यू हैव क्रिएटेड डिफरेंट ग्रुप्स एंड ग्रुप वाइज अगर आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो हमने ग्रुप वाला पार्ट तो आगे के सेशन आगे वाले वीडियो में देखा. बट यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि जो भी अलग अलग पार्ट है विच आर नॉट इंटरकनेक्टेड, so you have 20 test cases जिसमें 10 test cases अलग है, 10 test cases है. तो we have created two separate packages. Or so here I can also do one thing. I have multiple modules. Let's say मेरे project में I have 5 modules and each module I have 100 test cases. So total I have 500 test cases. Now what I have done is I have created one package for a module. एक मॉड्यूल का मैंने एक पैकेज क्रिएट किया है. सो आई हैव 5 मॉड्यूल्स. आई हैव 5 मॉड्यूल्स एंड फॉर ईच मॉड्यूल आई हैव 100 टेस्ट केसेस. हर एक मॉड्यूल के 100 टेस्ट. टोटल आई हैव 500 टेस्ट केसेस. मेरे पास टोटल 500 टेस्ट केसेस है एंड आई वांट टू रन ऑल माय 5 पैकेजेस एज अ individual test cases in a parallel mode. मुझे parallel में रन करना है. तो what I'm going to do, I'll create separate test. मतलब ये जो टेस्ट मैं बनाऊंगा ना, ये आपका मॉड्यूल 1 होगा जिसमें मॉड्यूल 1 के 100 टेस्ट केसेस मतलब 100 क्लासेस आ जाएंगे. यहाँ पे ये होगा मॉड्यूल 2. इसके अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो मॉड्यूल 2 के क्लासेस होंगे. वैसे ही मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड ऑल 5 मॉड्यूल्स विल गेट एग्जीक्यूटेड पैरेलली. राइट. सो ये सेशन बेसिकली आई मस्ट से दैट इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन. ज्यादातर टेस्टर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ही यूज करता है बिकॉज पैरेलल एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आता है. बिकॉज अगर एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट पे कनेक्टेड है और जो डिपेंडेंसी वाला टेस्ट अगर पहले रन हो गया तो आपको एरर देगा. दूसरा डुप्लीकेशन के इश्यूज इसमें आते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिजाइनिंग दिस. ओके, अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है. सो इंटरव्यू में अगर आया कि is it possible that can we run test cases in a parallel mode using TestNG, so your answer must be yes. आपको आंसर देना है कि we can run test in parallel at different level, like we can use a label as a methods, classes, test, suite. आप अलग अलग उसको रन कर सकते हो. Alright, thank you, have a good day.